Quadrilateral, the most important chapter of class 9 CBSE mathematics. What are quadrilaterals? Types of quadrilaterals, terms related to quadrilaterals, and the last one, angle sum property of a quadrilateral. These four things will be discussed in this video. Chapter number 8, Quadrilaterals. What are quadrilaterals? Types of quadrilaterals, terms related to a quadrilateral, angle sum property of a quadrilateral. Quadrilateral. The closed figure formed by four intersecting lines is known as quadrilateral, or the closed figure formed by four non-collinear points is also known as quadrilaterals. So according to first definition, the closed figure formed by four intersecting lines AB, BC, CD and AD. AB, BC, CD and AD are four intersecting lines. The closed figure formed by these four intersecting lines is known as quadrilateral. ABCD quadrilateral, right? Second definition, the closed figure formed by four non-collinear points. Same thing. देखो, collinear points means the points which lie on one line. The points which lie on a line is known as collinear point. यहाँ पे दिया है नॉन कोलिनियर पॉइंट. ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी. अभी ज्वाइन करो. The closed figure formed by four non-collinear points is also known as quadrilateral. Therefore, according to definition, ABCD is a quadrilateral. A quadrilateral has four sides. AB, CD, BC, AD. AB, BC, CD, AD are four sides of this quadrilateral, right? A quadrilateral has four angles. Angle A, angle B, angle C, angle D are four angles of this quadrilateral. A quadrilateral has four vertices. एक vertex, B एक vertex, C एक vertex and D एक vertex. So a quadrilateral has four vertices. Diagonals. A quadrilateral has two diagonals. How many diagonals are there? Two diagonals. Two non-consecutive point को, two non-consecutive vertices को join करो. Two non-consecutive vertex को join करो. जो line segment मिलता है, that is the diagonal of this quadrilateral. So there are in total two diagonals of a quadrilateral. In this quadrilateral, ACBD are two diagonals, right? Then terms related to a quadrilateral. Opposite sides, consecutive or adjacent sides, opposite angles and consecutive or adjacent angles. देखो, in PQRS quadrilateral, PQ is opposite to SR and PS is opposite to QR. PQ SR का opposite है, PS QR का opposite है. ये एक pair of opposite, ये दूसरा pair of opposite sides. Therefore, there are in total two pairs of opposite sides in a quadrilateral. In PQRS quadrilateral, angle P is opposite to angle R and angle Q is opposite to angle S. Angle P, angle R का opposite है, angle S, angle Q का opposite है. Angle P, angle R one pair of opposite angles, angle S, angle Q दूसरा pair of opposite angles. Therefore, there are in total two pairs of opposite angles in a quadrilateral. Then adjacent sides. Adjacent side का definition क्या है? Two sides having common endpoints is known as adjacent sides. देखो, PQ, PS, common endpoint P. Therefore, PQ, PS एक pair of adjacent sides. PQ, QR, common endpoint Q. Therefore, PQ, QR, another pair of adjacent sides. Now, SR, QR, common endpoint R. Therefore, QR, SR are a pair of adjacent sides. Now, PS, SR, common endpoint S. Therefore, PS, SR are another pair of adjacent sides. Therefore, in total, there are four pair of adjacent sides in a quadrilateral. Then next, consecutive or adjacent angles. What are adjacent angles? Two angles having common arm or side is known as adjacent angles. यहाँ पे देखो
टू एंगल, P एक एंगल, S अनदर एंगल, ये दोनों एंगल का कॉमन आर्म PS है, देयरफॉर एंगल P, एंगल S आर एडजेसेंट एंगल्स और कंसेक्यूटिव एंगल्स. एंगल S, एंगल R, common arm SR, therefore angle S, angle R are consecutive angles or adjacent angles. Now angle R, angle Q, common arm QR, therefore angle Q, angle R are consecutive or adjacent angles. Now angle Q, angle P, common arm PQ, therefore angle P, angle Q are pairs of adjacent angles or consecutive angles, right? So there are in total four pairs of adjacent angles in a quadrilateral. The angle sum property of a quadrilateral. According to this property, the sum of four angles of a quadrilateral is 360 degrees. But how is it possible? PQRS is a quadrilateral. PQRS is a quadrilateral. Sum of all angles मतलब angle P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S, ये कितना होगा? देखो 360 डिग्री कैसे हो रहा है. नाउ जॉइन PR. PR इज द डायगोनल ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो 1 2 3 4 5 6. तो इन PQR ट्रायंगल, angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree because it is a triangle. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. In PSR triangle, angle 1 plus angle C plus angle 5 is equal to 180 degree. Now in PQRS quadrilateral, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to what? देखो 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4, ये तो 180 डिग्री है. 1 plus 6 plus 5, 1 plus 6 plus 5, 180 डिग्री is equal to total 360 degree. Therefore, the sum of four angles of a quadrilateral is equal to 360 degree, right? Then देखो various types of quadrilaterals और types of quadrilaterals. Types of quadrilaterals में हमारा क्या क्या आता है? ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रंबस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट. तो पहले देखो what is trapezium? What is trapezium? A quadrilateral in which only one pair of opposite sides are parallel. This quadrilateral is known as trapezium. देखो ABCD is a quadrilateral. इसमें AB parallel to CD. Only AB parallel to CD. ADBC दो नॉन पैरेलल साइड है. AB parallel to CD. Okay, only one pair of parallel side is there. And ADBC are two non-parallel sides. If AD equal to BC, अगर AD BC के साथ इक्वल हो जाएगा, then this trapezium is known as isosceles trapezium. ऐसा समझ में? ABCD trapezium में only one pair of opposite sides are parallel to each other. Trapezium में क्या होता है? Only one pair of opposite sides are parallel to each other. बाकी दो नॉन पैरेलल साइड. अगर यही नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा, then this trapezium will be known as isosceles trapezium. If AD equal to BC, then ABCD is a isosceles trapezium, right? Then parallelogram. A quadrilateral in which both the pairs of opposite sides are parallel to each other is known as parallelogram. देखो ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral. इसमें AB parallel to CD and AD parallel to BC है. AD BC के साथ parallel, AB CD के साथ parallel. AB parallel to BC and AD parallel to BC. Both pairs, ये एक pair या another pair, both pairs of opposite sides are parallel to each other. Therefore, ABCD is a parallelogram. देखो parallelogram को सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है. ABCD is a parallelogram. सिंबॉलिकली पैरेललोग्राम को ऐसे डबल लाइन करके GM ऐसे सिंबॉलिकली लिखा जाता है. ABCD is a parallelogram. देखो AB parallel to CD. Therefore,
एंगल ए एंगल डी कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऐसे लिखो, इन पैरेललोग्राम adjacent angles are पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टी सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। इन ए पैरेललोग्राम adjacent angles are supplementary to each other. Then हमारा rhombus, a parallelogram in which all sides are equal is called rhombus. rhombus कहां से आया है? पैरेललोग्राम से ही आया है। ABCD is a parallelogram. ABCD is what? Is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है, क्या डेफिनेशन था? AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। AB CD के साथ इक्वल पैरेलल था, AD BC के साथ इक्वल पैरेलल था। इफ ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम का अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाएगा, देन दिस पैरेललोग्राम इज नोन एज rhombus. इफ इन ABCD पैरेललोग्राम AB equal to BC equal to DC equal to AD, then ABCD is a rhombus. Therefore, every rhombus is a parallelogram, but not every parallelogram is a rhombus, right? Then हमारा rectangle, a parallelogram in which one of its angle is 90 degree, then this parallelogram is known as rectangle. एक पैरेललोग्राम में अगर वन एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो जाएगा, देन दैट पैरेललोग्राम विल बी नोन एज रेक्टेंगल। देखो एबीसीडी जे पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, AB पैरेलल टू DC एंड AD पैरेलल टू BC। इफ एनी वन ऑफ इट्स एंगल, चारों एंगल से कोई एक एंगल का मेजरमेंट, एंगल A और एंगल B और एंगल C और एंगल D 90 डिग्री हो जाएगा, then this parallelogram will be known as rectangle. Then ABCD parallelogram will be rectangle, right? देखो ये अगर 90 डिग्री हो गया तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज एंगल्स आर सप्लीमेंटरी इन ए पैरेललोग्राम। ये 90 डिग्री मतलब 180 से 90 सब्ट्रैक्ट करो, ये 90 डिग्री, तो ऑल एंगल्स विल बी 90 डिग्री। देन दिस क्वाड्रिलेटरल और दिस पैरेललोग्राम विल बी नोन एज रेक्टेंगल, राइट? देन स्क्वायर, a rectangle in which two adjacent or consecutive sides are equal is known as square. देखो ABCD is a rectangle, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से आया है, अभी रेक्टेंगल से स्क्वायर आएगा। देखो रेक्टेंगल में ईच एंगल का मेजरमेंट है 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। इफ यहां पे रेक्टेंगल का पहले प्रॉपर्टी क्या है ना, AB इक्वल टू BC AB इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इक्वल टू DC एंड AB इक्वल टू BC। बट इफ कंडीशन है, इफ टू कंसेक्यूटिव साइड इक्वल हो जाएगा, टू एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएगा, इफ AB इक्वल टू DC हो जाएगा, ये इसके साथ इक्वल हो गया, देन दिस रेक्टेंगल विल बी नोन एज स्क्वायर। देन ABCD रेक्टेंगल विल बी क्या बन जाएगा, ABCD स्क्वायर। अगर ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा तो ये तो पहले से ही इसके साथ इक्वल है, तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये इसके साथ पहले से इक्वल है, तो ये चारों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होगा, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल में जो जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। स्क्वायर का एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट? देन द लास्ट वन, काइट। काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral in which two pairs of adjacent or consecutive sides are equal is known as kite. देखो two pair of adjacent, AB का adjacent AC, BD का adjacent CD, तो BD CD के साथ इक्वल है, AB AC के साथ इक्वल है। This type of quadrilateral is known as kite. The figure formed by
joining four non-collinear points or figure formed by the area formed by four intersecting lines is known as what? Quadrilateral. Right? If in this quadrilateral, ABCD quadrilateral में if only one pair of opposite sides are parallel to each other, if AB parallel to CD, only one pair of opposite sides, then this quadrilateral will be known as trapezium. Right? If quadrilateral में both the pair of opposite sides will be parallel to each other, then this quadrilateral will be known as parallelogram. Right? देखो quadrilateral में अगर only one pair of opposite sides parallel हो जाता है, then this quadrilateral will be known as trapezium. अगर both the pairs parallel to each other, then this quadrilateral will be known as parallelogram. देखो trapezium में only one pair parallel था, parallelogram में two pair parallel है, ABCD के साथ, ADBC के साथ. तो parallelogram trapezium से आया है. ट्रापेजियम का सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में है, बट पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी ट्रापेजियम में नहीं है. ट्रापेजियम इज द पेरेंट क्वाड्रिलैटरल फॉर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ट्रापेजियम से आया है. राइट? एवरी ट्रापेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम. राइट? एवरी ट्रापेजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, बट एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रापेजियम, बिकॉज पैरेललोग्राम ट्रापेजियम से ही आया है. ABCD इज ए पैरेललोग्राम. Parallelogram में both the pairs of opposite sides are parallel to each other. AB parallel to CD and AD parallel to BC. Angle A equal to angle C, angle B equal to angle D. Opposite angles are equal to each other. Angle A will be equal to angle C, angle B will be equal to angle D. Right? Diagonals are bisecting each other. देखो diagonal AC, BD are bisecting each other. Bisect में मतलब suppose ये midpoint O है, AO equal to CO, DO equal to BO. Diagonals bisecting each other. Fourth point, adjacent angles are supplementary. मतलब angle A plus angle D is equal to 180. Angle D plus angle C is equal to 180. Angle B plus angle C is equal to 180. Angle A plus angle B is equal to 180. Adjacent angles are supplementary. ABCD is a parallelogram. ABCD is what? Is a parallelogram. Parallelogram में opposite angles equal होता है, diagonals bisect करते हैं, opposite sides are parallel to each other, and adjacent angles are supplementary. We know. अगर किसी एक एंगल का मेजरमेंट सपोज इस पैरेललोग्राम में डी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया, एंगल डी का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम. इसमें एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो गया, मतलब एंगल बी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंटरी ईच अदर. ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री. तो पैरेललोग्राम क्या हो गया? अभी एबीसीडी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल. A parallelogram having one right angle is known as rectangle. तो ABCD क्या था? Parallelogram having one right angle is known as rectangle. A parallelogram having one right angle is known as rectangle. तो rectangle का parent quadrilateral क्या है? Parallelogram. Therefore, every rectangle is a parallelogram, but not every parallelogram is a rectangle. Every rectangle is a parallelogram, but not every parallelogram is a rectangle. Right? ABCD is a parallelogram in which both the pairs of opposite sides are parallel to each other. If in this parallelogram all four sides are equal to each other, then this parallelogram
विल बी नोन एज रंबस। ये क्या हो गया? रंबस। तो रंबस कहां से आया है? पैरेललोग्राम से ही आया है। Therefore, every rhombus is a parallelogram, but not every parallelogram is a rhombus. रंबस का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम, रंबस पैरेललोग्राम से ही आया है। ABCD is a rhombus in which all sides are equal. AB equal to BC equal to CD equal to LD. Diagonals are perpendicular bisector to each other. AC bisect BD and also जो 4 एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, each एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री। Therefore, diagonals are perpendicular bisector to each other. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। They are also bisecting each other. They are also perpendicular to each other. Therefore, diagonals are perpendicular bisector to each other. Diagonals bisect the vertex angle. देखो, diagonals bisect the vertex angle. मतलब this angle equal to this angle, this angle equal to this angle, this angle equal to this angle, and this angle equal to this angle. Diagonals bisect the vertex angle in case of a rhombus. ACD is a rectangle in which opposite sides are equal and each angle का measurement 90 degree. If ABCD rectangle में two consecutive sides will be equal to each other, then this rectangle will be known as what? Square. देखो, ये इसके साथ इक्वल है और ये इसके साथ इक्वल है। अगर दो consecutive साइड इक्वल हो जाएगा, then 4 sides will be equal with each other. AB equal to BC equal to CA, sorry, AB equal to BC equal to CD equal to AD. 4 sides will be equal with each other. Therefore, ABCD rectangle will be known as square. ABCD is a square. All 4 sides are equal with each other. All angle का, sorry, each angle का measurement 90 degree. Diagonals are equal. In case of rectangle and square, diagonals are equal to each other. AC equal to BD. Diagonal, दोनों diagonal का measurement equal आएगा in case of rectangle and square. क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपेजियम आया है, ट्रेपेजियम से पैरेललोग्राम आया है, पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल रंबस आया है, देन रंबस एंड रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन से स्क्वायर आया है, राइट? तो देखो, जिस क्वाड्रिलेटरल में ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रेपेजियम. If both the pairs of opposite sides are parallel, this quadrilateral is a parallelogram. Therefore, trapezium से parallelogram आया है, right? अच्छा, अभी parallelogram में if all sides are equal in a parallelogram, then this parallelogram will be known as rhombus. If one angle is 90 degree in a parallelogram, then this parallelogram will be known as rectangle. तो rhombus rectangle parallelogram से ही आए हैं. Now see, rhombus का all sides equal, rectangle का each angle का measurement 90 degree. ये दोनों का कॉम्बिनेशन से स्क्वायर आया है. स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री. ध्यान से देखो, रंबस और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन से स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल रंबस है, स्क्वायर का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है. एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ये ट्रू है, बट एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, ये फॉल्स है, राइट? एवरी स्क्वायर इज ए रंबस, ये ट्रू है, बट एवरी रंबस इज ए स्क्वायर, ये फॉल्स है. अभी देखो, रंबस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से आया है, रंबस एंड रेक्टेंगल का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर एवरी रंबस इज ए पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, बट एवरी पैरेललोग्राम इज ए रंबस, ये फॉल्स है. एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ये ट्रू है, बट एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, ये फॉल्स है. अब देखो, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम से आया है, पैरेललोग्राम का पेरेंट क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम, ये ट्रू है, बट एवरी ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, ये फॉल्स है, राइट? ऐसा समझ में, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रंबस, रेक्टेंगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से स्क्वायर है.